नमस्कार। एक बहुत दर्द भरी बात है। पानी बंद कर दिया। पीने का पानी नहीं है, नहाने का छोड़िए, टॉयलेट का छोड़िए, पीने का पानी नहीं। कहाँ? फिलिस्तीन में, पैलेस्टीन बोलते हैं जिसको अंग्रेजी में। कितने दिन से? शायद 12 दिन से। अब खारा पानी पीने को मजबूर हैं, गंदा पानी पीने को मजबूर हैं, बच्चे, बूढ़े, बीमार। उसकी बात ही नहीं कर रहा मैं कि अस्पताल पे बम गिराए, लोगों को बोला गया 11 लाख शिफ्ट कर जाओ साउथ में, नहीं तो मारे जाओगे, और जाते हुओं पे मिसाइल गिराई, और पानी भी नहीं, खाने की सप्लाई भी नहीं, पावर नहीं, अस्पतालों में पावर नहीं, अस्पतालों में एनेस्थीसिया नहीं, ज़मीन पे लिटा के सर्जरी हो रही है, विनेगर यूज़ हो रहा है। क्या होने वाला है या हो रहा है ऑलरेडी हफ्ता 10 दिन से? धीरे धीरे करके जलील होके निर्दयता से लोगों के ऊपर भूख प्यास बीमारी थोपी जा रही है। बड़ी हमदर्दी है बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े देशों को, इजराइल के लिए, हमें भी है। हमने कहा हमें एक भी मौत होती है तो उसके लिए बहुत दिल दुखता है, हर किसी का दुखता है। पेशावर में तालिबान ने बच्चे मारे थे 65 के करीब, ऐसा कोई हिंदुस्तानी नहीं था जो रोया नहीं था उस दिन। आज भी गला भर आता है सुन के कि स्कूल में आके स्कूल के बच्चे मार दिए। अगर 1200-1500 लोग टेररिज्म में मारे, बहुत अफसोस है। कई देशों के लोग किडनैप हुए, सब कुछ हुआ, बहुत अफसोस है। पर इतना बड़ा देश, एरिया में नहीं, टेक्नोलॉजी में इतना बड़ा देश, जो दुनिया भर को हथियार देता हो, दुनिया भर को इंटेलिजेंस देता हो, और बड़ा मशहूर हो एक बहुत ही इफेक्टिव इंटेलिजेंस के लिए, उस दिन फेल हो गया। और तो और अटैक होने के बाद में 2.5-3 घंटे तक, मैं उनका नाम ही नहीं ले रहा कौन थे वो लोग जो घुसे थे, सुनते हैं इन्हीं के पाले हुए थे वो, अराफात को डाउनग्रेड करने के लिए ये पाले थे, उन्हीं के पाले कुत्ते उनको काट गए, और आज रो रहे हैं कि हमें काट गए साहब। अक्सर होता है, दुनिया भर में यही होता है। तालिबान भी किसी ने पाले थे, इधर में भी हमारे कई ये इतिहास में होता है। पर आज मुद्दा वो नहीं है किसने क्या किया था, आज मुद्दा ये है 20, 21, 22 लाख लोग जो उजड़े हुए हैं। एक जनरेशन, उनकी पिछली जनरेशन डेकेड से उजड़ी हुई है। Since my message is for the entire world, uprooted, deprived, harassed, intimidated Palestinian people, not cared for even by the United Nations. They could establish a country for the Jews. They could have simultaneously established an independent territory in that area, which was adjusted for the Jews. Why not for the Palestine? वो किसी ने, शायद क्रिश्चियन ने कहा था, we are all equal, but some are more equal than others. Jews are important the world over. It's very clear to us. तभी तो अमेरिका के प्रेसिडेंट साहब भी गए, फिर ब्रिटेन के हमारे अपने ही ऋषि सुनक साहब भी गए, फिर
एक और आए, जर्मनी वाले भी गए। दुनिया के सभी अमीरजादे वहां जाएंगे, अपनी हाजिरी लगाने जाएंगे। अरे बेशर्मो, इंसानियत की दरबार में भी, भगवान के दरबार में भी थोड़ी हाजिरी लगाइए ना। रोइए थोड़ा सा उन 1000 बच्चों के लिए जो मारे गए। रोइए थोड़ा सा 500 लोग जो बम्बार्डमेंट में हॉस्पिटल में मारे गए। इस पर बहस ही नहीं मैं कर रहा बॉम्ब किसने गिराया। अब टेक्नोलॉजिकली सबने बता दिया है किधर से आया था। मुद्दा यह है, बॉम्ब गिरते हैं साल 1.5 साल से यूक्रेन में जो हो रहा है। इतने सुंदर देश का ऐसे बेड़ा गर्क कोई कुछ कर नहीं सका। इंसानियत मर गई है क्या इस दुनिया में? पानी रोक दिया, पीने का पानी रोक दिया। इलाज के लिए पानी नहीं है, इलाज के लिए पावर नहीं है। जर्नलिस्ट मार दिए। और अपील करते साहब, पानी तो छोड़ दो उनका, चलो खाना छोड़ो, पानी तो दे दो। अरे वाह! अरे बाइडेन साहब, आप हाथ जोड़ रहे हैं उनके आगे जो आपके रहमो करम पे, आपके टुकड़ों पे पलते हैं। You could have told Israel, you got to release water, you got to release food, you got to release even medicines. WHO के trucks, they're standing in queue. And मूड नहीं बना साहब अभी हमारे वो उन तानाशाह जी का। उन्हीं का अपना मीडिया उनको कोस रहा है। उनके अपने लोग कह रहे हैं कि इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया हमारे देश का। और ऐसा आदमी जो अपने ही देश में इतनी गालियां खा रहा हो, अरे उसको आप जब हथियार दे रहे हो, पूरी सपोर्ट दे रहे हो, आपका पूरा नैतिक हक बनता है, यू हैव ए मॉरल राइट टू टेल देम दैट ह्यूमैनिटी इज टॉप, ह्यूमैनिटी नंबर 1। All over our country, all over the world, water charity is a tradition to give water to the thirsty, to give water to the birds, to give water to animals, and to give water to humans is considered the most sacred act. And to deny water to a war-ridden country, a war-ridden territory, is the biggest sin, biggest ever sin. And to tolerate denial of water is another big sin. Shame on all those superpowers who could not ensure medicines, water, hospital safety, school safety, home safety to those who have nothing else. They have no national sovereignty, they have no sovereign nation for them, and they have no water to drink. I'm not appealing to anyone to release water or medicines. I'm only saying very with pain in my voice, pain in my heart, and I'm saying to shame on them who could not ensure water. Shame on them who could not do anything to prevent those deaths in Israel and to prevent double, triple, and much more deaths of families, little ones in Palestine. For the sake of these innocents in the region, in both the countries, they could have used their intelligence, they could have used their persuasive powers, their financial powers, their geopolitical powers to save humanity. But to look the other way,
when water is being denied, food is being denied, power to hospitals has been denied. This is the lowest ever. The humanity of these, the human ethics of these big nations has gone. It's gone to dogs. All those who are looking the other way or pleading helplessness, I can only say this: hottest places in hell are reserved for those who in such crises maintain their neutrality or show their helplessness. I'm sorry to say, even the Arab nations have only given lip sympathy to these helpless Philistines. I agree, they had got beaten earlier, but today they have the power to help. They're not short of power, they're short of humanity and short of sincerity. I'm appealing to all. Please, please, for God's sake, now and forever in future, let nobody in any war situation flout the Geneva Conventions. Don't touch a hospital. Don't touch the water supply. If today water supplies are opened up, the bombardment of the area has ensured that all the pipelines are smashed. Restoring water needs stopping the war, immediately on war footing, restoring the water lines. I'm short of words. I'm too shocked to say what I want to say, but I have not been able to say. It should be very clear to all those who look the other way or plead helplessness. A denial of water, power, food, shelter, and deny the right to life, the right to sleep to little ones. Half of these 2.1 or 2.3 million are kids. Half of those who died in this bombardment of the Palestine are kids. Kids have no nationality. Kids have no religion. Kids can't be terrorists. Kids are kids. Kids, the great angels, the sweet angels, innocence personified. Look at them, look at all of them as their own kids. Give them water, give them food, give them medical aid, give them their shelters back. Before you start finding permanent solution to the Philistine problem, give them a sovereign territory to live with dignity, to live like all others who live. For God's sake, think of your own reputation and your own peace and your own place in history. All those who had done nothing for the Philistine or peace in the region, they're surely gone into the bin, the garbage bin of history. God punished them all. God punished these shirkers, inefficient global leaders who could not do anything worthwhile for giving water, medicine, food. For how many days? 12 days, 13 days? What a shame. No food, no water, no power, no shelter.
Are we humans? Is the humanity alive on this planet? What a shame. What a shame.